Good afternoon, everybody. I'm Sayukta, your host for today's live from All About Skin Allergy team. I'm sure all of you must be keeping good health. Today, we are going to discuss about our skin health with focus on urticaria or hives, which we or our near and dear ones would have encountered at some time in their lives. Urticaria is characterized by a round rash on the skin that itch intensely. It may be due to the chemicals present in certain food items, allergy to certain medications, insect stings, sunlight, and sometimes even the cause is unknown. As per study published in Indian Journal of Dermatology, Venerology, and Leprosy, more than one-fifth of the population suffer urticaria at one time. 60% of patients are in the age group of 20 to 40 years. Incidences is higher in older age group. Urticaria is classified as acute and chronic, but the most important part is not to ignore it, and doing self-medication can worsen its symptoms. Consult your nearby qualified skin specialist immediately for an early remission. In today's digital world, it's a boon or blessing if we can get to hear from an expert dermatologist online about urticaria and its types, how we can prevent it, the kind of test required for its diagnosis, the right treatment and management approach for an early relief. So, ladies and gentlemen, girls and boys, we have with us renowned dermatologist of India, Dr. Hardik Dave, live from Mumbai, who will educate us more about urticaria and its management. Dr. Hardik Dave, MBBS MD, is an expert dermatologist, that is, skin specialist dealing with skin and hair diseases like acne, fungal infection, hair fall, pigmentation. He is also adept in anti-aging cosmetic procedures like Botox and fillers. Dr. Dave is a reputed dermatologist in Mumbai with over 16 years of experience. He has pursued his MD from Sardar Patel Medical College, Bikaner, Rajasthan in 2014 and MBBS from Grant Medical College, Mumbai in 2009. He is currently practicing at Saibaba Polyclinic and Laboratory in Kandivali, East Mumbai, and Scarlet Skin and Hair Clinic in Kandivali, West Mumbai. A very good afternoon to you, Dr. Dave, and warm welcome. Thank you. Thank you for having me. And it's a pleasure to be here and educate everyone about urticaria. It's an absolute pleasure for us as well, Dr. Dave. To start, we will first like to understand from you what is urticaria. How do we understand? We would like to have some clarity over urticaria. Okay, so urticaria is the English name, the medical name. In general, in English, what we call it is hives. Okay, and in the local languages, we have different names for that. So Gujarati people will call it sidus. The Marathi people will call it something else. So each and every one calls it different. Hindi and Marathi people generally call it pitta. Pitta utra body pain. So many a times when they come, they don't know what it is, but they call it what they call it in the regional language. So in Mumbai, basically where we have more of Marathi, Hindi and Gujarati people, so either they call it pitta or they will call it chai. Okay. So the pitta is basically what they feel is there is acidity in the body, that's why it is getting caused. And sidus is something which Gujarati people call the same thing. So what the patient experiences when he or she first get urticaria is basically itching. So typically when the patient comes, he says कि sir खुजली होता है, कहीं भी होता है, body पे कहीं पे भी start होता है. It can start anywhere, face, chest, body, trunk, anywhere, legs, anywhere. And generally what happens is you start with itching, there is nothing visible, and then a red rash starts developing. It can be pinpoint size to whole body size if it is very severe. So it is blotchy, red, raised from the surface. If you touch it, it feels a little bit warm. And when it is quite red compared to your normal skin. When you press on it with a little pressure, it becomes white. And then once you leave it, it then becomes red. So that's called blanching. So that's what is typically there. So patient is more distressed about it, and it is generally not much more in the morning. It starts when body
starts to cool down in the evening night and or late night, it generally is most prominent. So at that time, many a times doctors are also not available to patient because it's more stressed out. So that is the general trend for some most of the people. It can come and go anytime, any place, anywhere. Right. So that's Urticaria. कभी भी हो सकता है, किसी को भी हो सकता है, किसी भी वजह से हो सकता है और बॉडी में कहीं पर भी हो सकता है, but definitely वो जब भी होगा तो आपको बहुत ज्यादा itching होगी और जो दूसरे डॉक्टर ने बताए हैं वो symptoms भी होंगे. Symptoms पर हम आगे और डिटेल में बात करेंगे डॉक्टर, but now I would like to know the causes responsible for urticaria. What are the main causes? किस वजह से urticaria होता है? ओके, अर्टिकेरिया जो है किसी भी चीज से हो सकता है. देयर इज अ सेइंग दैट एनीथिंग अंडर द सन एंड द सन कैन कॉज इट. सो बेसिकली एनीथिंग. बट जो पेशेंट्स आते हैं मोस्ट कॉमनली दे ट्राई टू एसोसिएट इट विद सम फूड्स. फूड एलर्जीज आर कॉमन बट नॉट द ओनली कॉज ऑफ योर अर्टिकेरिया. सो फूड से हो सकता है, किसी खाने की चीजों से हो सकता है. खाने में जो कॉमन चीजें हैं जिससे होता है, इट इज फर्मेंटेड फूड. Like your dokla and your South Indian food, anything fermented, anything which has a typical sour taste, like your pickles. And the most common is the food additives and preservatives and coloring agents. So ये जो होते हैं वो आपके packaged foods में रहेंगे. आप बाहर खाना खाने जाओगे, Chinese, Mexican, whatever, which has a good strong color, उसके अंदर जो कलरिंग एजेंट डाले रहते हैं उसके वजह से होता है. सो मेनी टाइम्स पैकेज फूड जो रहता है, चिप्स एंड ऑल, those can also cause it. So food, if you come to know किस चीज से हो रहा है, तो what happens is when you take that food, immediately you start getting it within an hour or two. So you can associate it with it very strongly. तो बट क्या होता है कि पेशेंट्स को लगता है कि ये फूड से ही होता है और चीजों से नहीं होता है. मोस्ट ऑफ द टाइम्स अगर आपको फूड से है किसी, देन पेशेंट टिपिकली स्ट्रांगली बोलता है कि मुझे इससे होता है क्योंकि ये खाने के बाद तुरंत उस दिन होता है मुझे, अदरवाइज नहीं होता है. So foods, it can be one food or multiple food. It can be only food or something in air also. So हवा में specifically जिसको seasonal होता है, only in winters, only in summers या only in rainy season होता है. So that is something which is airborne. So whatever is there in the air, the pollens which are there in the air in that time, or some construction or renovation has started in the surrounding area, तो nickel, chromium और वो सब जो sawdust and whatever is there in the air, उससे trigger होता है. Another major factor which is there in today's lifestyle is the stress. Stress induced urticaria is quite common. तो एग्जाम्स के टाइम पे किसी बिजनेस के कोई स्ट्रेस के वजह से, all of this can also cause urticaria. So and it can be quite distressing, especially if it's during your exams. So you are not able to study and that increases your stress more and that increases your urticaria more. So ये सब चीजें हैं, but it can be because of heat, it can be because of cold, it can be because of something which you wear, something which you come in contact with. So उससे भी हो सकता है. And there is one another category called autoimmune urticaria. So in which your body thinks that it is getting allergic to something. Actually, there is nothing which is causing the allergy, just that your body immune system gets a wrong impression that you are getting an allergy. So उसमें external factor नहीं होता, it is all internal. Your body is making a mistake of thinking that there is an allergy to something और उसके वजह से होता है. So that is the most difficult thing to tackle. Right. So these are the main causes of urticaria, and as the doctor have very rightly said that anything under the sun or the sun, तो किसी भी वजह से urticaria हो सकता है. सिर्फ अगर आपको लगता है कि food allergy से हो सकता है, food allergy एक reason हो सकता है, but दूसरे भी बहुत सारे reasons हैं. डॉक्टर, urticaria आपने शुरुआत में बताया कि कैसा दिखता है, कैसा फील होता है, लेकिन थोड़ा हम डिटेल में जानना चाहें कि किस तरह का ये होता है, कैसा दिखता है, how does it look like, and is it an allergy? Yeah, it's an allergy to something, or body thinks that it is an allergy to something. So उसमें क्या होता है, suppose it starts in your hands. So it can start here or it can start anywhere. So first you'll start getting itching, खुजली होना start होता है, then small red dots आते हैं, and then it becomes bigger. Irregular shape होता है, it is skin से थोड़ा ऊपर raised होता है, red होता है.
And many a times what happens, आप scratch करते हो, when you scratch तो आपके जो उंगलियों के जो scratching का marks है वो पूरा prominent हो जाता है. You can get literally straight lines of straight raised red lines. वो हो सकता है. And in fact some people like to write something and you can literally see that on your skin raised over the in red lines. तो वो होता है. अभी जब ये सिवियर होता है तो धीरे 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 स्प्रेड होने लगता है, फुल बॉडी पे आता है. Sometimes 50% of body से भी ज़्यादा cover होता है. Once it increases even more, you can get it on the scalp, you can get it around your eyes. Eyes swollen हो जाती है, छोटी छोटी हो जाती है, दिखती नहीं है आसपास की eyes, because the skin is quite thin over there, swelling हो जाता है. Lips also start to get swollen. So this is the severe version, that is it is landing up into angioedema. इसको angioedema बोलते हैं. तो तब आई स्वेलिंग आती है, लिप स्वेलिंग आती है. उसका नेक्स्ट स्टेज होता है थ्रोट के अंदर इंटरनल स्वेलिंग आना चालू होता है. सो दैट इज द वन ऑफ द मोस्ट सीरियस वर्जन्स. तो उसके जब ऐसा होता है तो यू हैव टू इमीडिएटली गो टू अ डॉक्टर, बिकॉज अगर आपका विंड पाइप में स्वेलिंग स्टार्ट हो जाता है तो इट कैन क्लोज अप एंड इट बिकम्स डिफिकल्ट टू ब्रीथ. So that is the life-threatening thing which can happen. So immediately you have to take injections for that and वो settle हो जाता है. So that is the way it happens. Generally सुबह नहीं होता है. It happens in the evenings or in the nights. If it is severe, it can happen full day, but it is less severe in the morning time, early morning time, and as the day progresses, it becomes more and more severe. कुछ लोगों को जिनको minor होता है उनको कोई दवाई लेंगे. Many times they go to a GP, they take some medicine for some time, it subsides, फिर वापस आता है. So basically they have to understand the disease and if they tackle it, then they will be able to lead a very normal life. Right. Doctor, you just said that, it can start from a small rash and it can actually go on and spread and cover half of your body. And again, it can go really severe. तो एक आम इंसान जैसे आर्टिकेरिया, एक तो उसे शायद उतना नॉलेज नहीं है. हम इस तरह के सेशंस करके यही कोशिश कर रहे हैं कि लोगों को अवेयर कर सके आर्टिकेरिया के बारे में. तो अगर उन्हें सिर्फ इतना समझ में आ रहा है कि कुछ रैशेस आ रहे हैं, कुछ रेड रेड है जो थोड़े से स्वेलन अप है, अगर हम स्क्रैच कर रहे हैं तो वो निशान उस पर दिख रहे हैं, तो आर्टिकेरिया मानकर डॉक्टर से सलाह लेनी चाहिए. लेकिन और भी कुछ ऐसी बातें जो लोगों को ध्यान में रखनी चाहिए. कई बार बहुत सारा टाइम हम सिर्फ इसमें वेस्ट कर देते हैं कि ये ठीक है, छोटी सी एलर्जी अपने आप ठीक हो जाएगी, या कुछ हो गया है, रैश है, अपने आप ठीक हो जाएगा. तो हमें ऐसे वेट करना चाहिए और इमीडिएटली वी शुड गो एंड कंसल्ट अ डर्मेटोलॉजिस्ट. Yeah, ideally you should immediately see a doctor, a dermatologist preferably, क्योंकि एक बार ये बढ़ना स्टार्ट होता है, as I said, sometimes it triggers and gets very strong. तो जब ऐसा बहुत सीवियर हो जाता है, ये जनरली होता है रात के टाइम पे. दैट टाइम मोस्टली स्किन डॉक्टर्स आर नॉट देयर. सो तभी बहुत सीवियर हो जाता है और बहुत डिस्ट्रेसफुल हो जाता है. एंड इट इज क्वाइट इतना खुजली होता है कि लोग सब कपड़े निकाल के बंदे पे टीचिंग करते हैं. सो उतना सीवियर हो सकता है. सो व्हाई वेट टिल दैट टाइम? Okay, you should tackle it as early as possible. नहीं तो कैसा होता है कि if you keep on neglecting it, your allergy becomes stronger and stronger. The more you are exposed to the allergen, the more allergy keeps on increasing. और उसके बाद फिर it keeps on increasing more and more, and you can land up getting the angioedema thing. So once you come to know, एक बार आप कंसल्ट कर लीजिए, आपको डिसीज के बारे में अच्छे से समझाया जाएगा. Once you get to know, then you will be able to mostly handle it by yourself as per the doctor's instruction. If it becomes very severe, that time you can visit them again. But if it is a chronic thing, you will be taught how to handle it, and your life will very much be under control. Right. So as the doctor have very well explained that it can go and become a life-threatening thing, though that's very rare, but the chances are there. So it's better that immediately we seek some medical help, and please don't go and buy things over the counter. Don't talk to your chemist की आप केमिस्ट के पास गए और उनसे बोला कि मुझे थोड़ी सी एलर्जी हो रही है, थोड़े से रैश हो रहा है, कोई दवाई दे दीजिए. उससे हो सकता है आपको इमीडिएट रिलीफ मिल जाए, लेकिन अगर आपको लॉन्ग टर्म रिलीफ चाहिए, सही ट्रीटमेंट उसके लिए बहुत जरूरी है, और उसके लिए आपकी मदद एक डर्मेटोलॉजिस्ट ही कर सकते हैं. प्लीज अपना टाइम वेस्ट ना करें, एक डर्मेटोलॉजिस्ट के पास जरूर जाए. हम ये भी जानना चाहेंगे डॉक्टर, एज इनिशियली आई सेड दैट देयर आर टू टाइप्स ऑफ urticaria, acute and chronic.
एज द नेम सजेस्ट ऐसा लगता है कि एक्यूट वो है जो शायद जल्दी चला जाता होगा, क्रॉनिक वो है जो एडवांस हो चुका है या जो बहुत दिनों से है। तो उसको हम थोड़ा आपसे समझना चाहेंगे दोनों को। और जो क्रॉनिक है क्या वो पूरी तरह से ठीक हो सकता है? हाउ विल दे गो अवे? Okay. So, as you rightly said, acute और chronic जो है, acute मतलब जो short term से है, generally less than 4 weeks. Chronic जो होता है, that is more than 3 months. So, बीच का जो period है वो सब acute. But mainly जो acute होता है, it is comes like an attack. तो वो उसमें कैसा होता है कि जो भी एलर्जन आपको एलर्जी कॉज किया है वो आपके लाइफ के आपके जनरल लाइफस्टाइल के अंदर आपको एक्सपोज नहीं होता, वन टाइम यू आर एक्सपोज टू दैट एंड तभी आपको उसका एलर्जी हुआ है। सो वंस यू ट्रीट इट, जब बॉडी से आपका वो एलर्जन चला जाएगा, देन जनरली इट डज नॉट कम बैक अंटिल एंड अनलेस यू आर एक्सपोज टू इट अगेन। सो ये इसका टिपिकली जनरली ऐसा रहता है कि कहीं बाहर गए हैं या बाहर खाना खाया है, फिर गोन आउट ऑफ टाउन समवेयर, और या तो फिर घर में कुछ काम क्लीनिंग या रीडेवलपमेंट या ऐसा कुछ हो रहा है विच इज एक्सपोज्ड ड्यू टू सम न्यू एलर्जन, उसकी वजह से आपको ये चीज हुई। उसका ट्रीटमेंट करेंगे 1 or 2 weeks, इट गोज अवे, फिर वापस आता नहीं है अनलेस एंड अनटिल यू आर एक्सपोज्ड टू सेम थिंग अगेन इन फ्यूचर। तो ये एक्यूट वाला हो गया, विच इज वेरी इजी टू मैनेज बिकॉज उसकी दवाई लेंगे 1-2 हफ्ते में ठीक हो जाता है। सेकंड थिंग, द क्रोनिक वन इज द मोस्ट डिफिकल्ट थिंग टू गो। तो उसमें क्या होता है कि द एलर्जन जिस चीज से आपको ये एलर्जी है और वो आपके लाइफस्टाइल में रहता है, मीन्स व्हेन यू आर एट होम या ऑफिस या आप ट्रैवलिंग कर रहे हो तब आप उसको एक्सपोज होते हो और देयर इज नो वे टू अवॉइड इट। सो कॉमन चीजें होती है हाउस डस्ट माइट, डस्ट की वजह से है, समथिंग इन द एयर, पोलन्स है, तो इन सब चीजों से होती है। स्ट्रेस इंड्यूस्ड रहता है तो उसको तो आप कुछ नहीं कर सकते, वेदर से होता है उसका भी कुछ नहीं कर सकते। सो इन सब चीजों से होता है तो उसको आप अवॉइड नहीं कर सकते एंड इट इज गोइंग टू बी देयर इन योर लाइफ फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम। हाफ ऑफ द पेशेंट वी डोंट कम टू नो व्हाट इज कॉजिंग द एलर्जी, तो पता ही नहीं चलता किस चीज से होता है। इवन आफ्टर डूइंग अ लॉट ऑफ टेस्टिंग आल्सो मेनी टाइम्स पकड़ में नहीं आता किस चीज से हो रहा है, तो देन यू हैव टू लिव विद इट। सो एंड व्हाट हैपेंस, पेशेंट्स आर अंडर मिसकंसेप्शन कि भाई आप दवाई लोगे ठीक हो गया अभी उसको छोड़ दो। So it doesn't work that way. Many times what happens, patient एक डॉक्टर के पास जाता है, थोड़े टाइम दवाई करता है, it is under control, फिर वापस आता है तो फिर वो छोड़ के दूसरे डॉक्टर के पास, they go doctor shopping, they land up meeting 3 or 4 dermatologists, but they have to understand कि it is not something which will go away just by taking a few weeks of course of medicines. तो you can equate it something to like diabetes. जैसे diabetes होता है, आप डायबिटीज की दवाई लोगे आपका शुगर कंट्रोल में रहेगा, डायबिटीज की दवाई लेना छोड़ दिया शुगर बढ़ जाएगा। So that is understood very well by the patient that diabetes cannot be cured. You have to take medicine for a long time till the time you are taking medicine everything will run under control. If you stop it, it will come back. So same चीज अर्टिकेरिया का है, खुजली है, एलर्जी है, once you are giving the anti-allergic medicine it is suppressing the allergy, it is not going to get rid of the cause. तो आपको वो दवाई से एलर्जी सप्रेस होता है एंड देन टिल द टाइम इट इज ऑन इन योर बॉडी, द मेडिसिन जब तक आप ले रहे हो तब तक वो एलर्जी सप्रेस रहेगा। फिर दवाई छोड़ दोगे तो एलर्जन अगर आपके एटमॉस्फेयर में है तो फिर आपको वापस एलर्जी होगा। सो वो मेंटेन करने के लिए यू हैव टू टेक द मेडिसिन फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम। अभी वो कब जाएगा उसका कोई बता नहीं सकता, इट कैन गो इन 1 week, इट कैन गो इन 1 year, और इट मे नॉट गो एट ऑल। सो वो कब जाएगा वो ऊपर वाला ही बता सकता है, कोई डरमत नहीं बता सकता। सो यू हैव टू टेक, सो जनरली व्हाट आवर लाइन ऑफ मेडिकेशन इज कि 2 या 3 महीना हम कंटिन्यूस मेडिसिन देते हैं, देन वी स्टॉप एंड सी इफ द एलर्जी प्रोडक्शन का जो सिस्टम है आपके बॉडी का या तो वो सप्रेस हो गया रहेगा या तो आपके लाइफस्टाइल में से एलर्जन चला गया है तो आपको वापस नहीं होगा, अदरवाइज इट कम्स बैक। सो इसके जो ट्रीटमेंट के लिए जो मेडिसिन यूज करते हैं वो सेफ है, you can take it lifelong without any issues. तो आप वो रोज रात को एक टैबलेट खाओगे which is safe, not causing any side effects. आप लंबे टाइम तक you will be able to live with it and you will be very comfortable. Right. So viewers, I think if you're wondering what chronic urticaria hives are and how will they go away, how will they fade away, then you
should have understood by now कि ट्रीटमेंट कंप्लीट करना बहुत जरूरी है। ऐसा नहीं है कि क्रोनिक आर्टिकेरिया किसी को है, वो डर्म के पास जाते हैं, डर्मेटोलॉजिस्ट के पास जाते हैं और मेडिसिन लेकर थोड़ा सा भी रिलीफ होता है तो ये एक टेंडेंसी हम लोग छोड़ देते हैं कि बस हो गया, आराम मिल गया। लेकिन अगर आपको जिंदगी भर आराम चाहिए आर्टिकेरिया से, आप नहीं चाहते कि वो बार बार आए और आपको परेशान करे, तो आपको वो ट्रीटमेंट कंप्लीट करना पड़ेगा। उसमें 1 महीना भी लग सकता है, 1 साल भी लग सकता है, 10 साल भी लग सकता है, ये कोई नहीं बता सकता। लेकिन प्लीज ट्रीटमेंट को बीच में न छोड़े, ये खतरनाक हो सकता है, तो ट्रीटमेंट कंप्लीट करना बहुत जरूरी है। I would also like to know, doctor, that what are the potential complications of urticaria if left untreated? अगर इसका ट्रीटमेंट कोई कराने जाए ही नहीं तो क्या क्या कॉम्प्लिकेशंस हो सकती? So see, main complication उसका तो यही है कि your life becomes hell. So it is a minor thing, generally life threatening नहीं होता है, but it is very irritating. When you are in a function, when you are in a meeting, आप किसी से बात कर रहे हो, and you feel lot of urge to eat, पूरा स्क्रैच करने का इच्छा होती है, so that becomes very uncomfortable, and you start getting those hives, तो पूरा red होने लगता है, face also becomes red, you start getting blotches on here, if it becomes severe तो आपका lips भी बड़ा हो जाता है, and you are very uncomfortable. So that discomfort is the main problem of urticaria. बाकी in general severe चीजें नहीं होती, 90% 99% केसेस में सीवियर चीजें नहीं होती है, बट मोस्ट ऑफ द टाइम वो आपका जो डेली रूटीन का लाइफ है, इट बिकम्स वेरी इरिटेटिंग, स्पेशली अगर आप ड्राइव कर रहे हो तो खुजली हो रही है तो आप सोचिए क्या करोगे। सो इट्स लाइक दैट, आपका रूटीन लाइफ जो है दैट बिकम्स वेरी प्रॉब्लमेटिक। ऑफ कोर्स अगर इफ इट्स प्रोग्रेसेस देन लाइफ थ्रेटनिंग चीजें हो सकती है, बट अदरवाइज मोस्टली कुछ इश्यूज होते नहीं है, but main thing is your life becomes very irritating. Right. I can imagine, how irritated, how frustrated a person can be with urticaria, because आपको intense itching होती है और कभी भी वो itching की urge हो सकती है, and it can be actually severe. तो इस तरह का एक डिस्कम्फर्ट जब एक पेशेंट्स के पास होता है, उसके साथ होता है, तो डेफिनेटली उससे भी एक स्ट्रेस होता है। आप पब्लिक प्लेस पे या सोशलाइज करने में थोड़ा ऑकवर्ड फील करते हो, बिकॉज एनी टाइम दैट अर्ज टू इच कैन कम टू यू। नाउ इट कैन अगेन क्रिएट स्ट्रेस। आपने भी इनिशियली बोला कि स्ट्रेस की वजह से भी आर्टिकेरिया हो सकता है, तो इस स्ट्रेस को हम समझना चाहेंगे आर्टिकेरिया के रेफरेंस में कि कैन आर्टिकेरिया बी कॉज्ड बाय स्ट्रेस, and if yes, then how do stress urticaria looks like? Yes, urticaria can be caused by stress. So sometimes when there is exam period, many times I have patients who get all itchy, scratchy, and they start getting urticaria. So वो होता है, and generally it is almost full body, small pinpoint rashes, जैसा in my personal practice, that's what I've seen, but it can look like anything from minor to major. The look wise, it is same like the general urticaria, but it is definitely stress induced, because many times what if it is say because of exam, then if we start talking about exam and how is the preparation and all those things, the symptoms will aggravate. So you will come to know when whatever is causing the stress, if that topic comes out or the patient starts thinking about that particular thing, तो फिर उसका वो flare up होता है। And कैसा हो गया कि आजकल बेसलाइन स्ट्रेस जो रहता है अपना, वही बहुत ज्यादा हाई हो गया। So even when you are asleep, you are not able to completely de-stress yourself. So that produces a lot of stress on the body, and that also increases it. So many times I've seen patients who are like that. So unko, it's my personal opinion, but not in textbooks. I tell them to go and take a vacation. So बोलता हूँ फोन स्विच ऑफ कर दो, सब कुछ बंद कर दो, disconnect with the civilization, go somewhere and spend few days and come back. So that actually helps if it is stress induced. It decreases the stress a lot, and that helps with the itching part. Many times what happens, if it is stress induced, you have to give stronger and stronger medicine, almost make the patients asleep for the medicine to start acting, to give the proper result. So controlling the cause is the main thing,
if you can find it. So stress है तो फिर I tell them to go for meditation, go to vacation, take a weekly off, because many times they are working 6 days in office, 1 day at home. That's what happens. So that's what अपना lifestyle में थोड़ा distress करने की जरूरत है, correct? Right. I think बहुत ज़्यादा ज़रूरत है हमारे lifestyle को थोड़ा distress करने की, and as very rightly doctor has said that you need to take a break, you need some me time. So if you're really busy, you're a workaholic, or you're just pushing yourself, please stop at some point of time and think of you, and also think that stress can make your health conditions worse. So take a break and stay healthy. That's important. Doctor, मैं ये भी पूछना चाहूंगी आपसे, as we are talking about stress, it's look like a vicious circle. Stress की वजह से अर्टिकेरिया होता है, अर्टिकेरिया की वजह से स्ट्रेस होता है. तो I can imagine कि कितना एक पर्सन परेशान हो जाता होगा कि अर्टिकेरिया हो गया, वो किसी पब्लिक प्लेस पे जा रहा है, सोशलाइज करने जा रहा है, पार्टी करने जा रहा है, तो कहीं कहीं उसको ऑकवर्ड फील होता है. कई बार जैसा कि आपने कहा कि स्वेलिंग भी आती है लिप्स में या किसी और पार्ट में, या कंटिन्यूअसली वो इच कर रहा है, तो थोड़ी बिहेवियर शेविंग भी झेलनी पड़ती है, लोगों के कॉमेंट्स भी झेलने पड़ते हैं. तो जब एक पेशेंट आपके पास आता है, तो बीमारी से निजात दिलाना या उससे रिलीफ दिलाना तो एक बात है, लेकिन क्या आप उसको थोड़ी सी मेंटल काउंसलिंग भी करते हो, उसकी थोड़ी काउंसलिंग करते हो साइकोलॉजिकल पीस के लिए, मेंटल पीस के लिए भी, वो भी जरूरी है? या जरूरी है. अगर बहुत ज्यादा स्ट्रेस इंड्यूस्ड है या पेशेंट इज टेकिंग अ लॉट ऑफ स्ट्रेस बिकॉज ऑफ दैट, तो आई सेंड देम टू साइकोलॉजिस्ट. दैट आल्सो हेल्प्स, बिकॉज एक्सपर्ट केयर इन साइकोलॉजी एक्सपर्ट्स आर देयर. सो उनसे सलाह लेंगे तो ज्यादा बेटर है, तो ज्यादा अच्छा रिजल्ट आएगा. If it is because of stress induced or patient is taking a lot of stress because of that thing. अनदर थिंग इज कि एक बार उनको पूरा प्रोसेस एक्सप्लेन कर दिया कि ये कैसे होता है, हाउ टू मैनेज इट, मोस्टली वो लोग पीपल आर एबल टू हैंडल इट. एंड व्हाट आई सजेस्ट एक्स्ट्रा फॉर देम फॉर दिस सोशल ओकेजन्स कि whatever the medicine I'm giving, generally 1 tablet in a day is sufficient. Sometimes if it is needed, more is required. So I tell them, keep 1 strip of the medicine with you in your purse or with you always, all the time, whenever is needed. इसमें कैसा होता है कि जब अर्टिकेरिया स्टार्ट होने वाला है, हिट होने वाला है, तो पर्सन कम्स टू नो कि बिफोर इट्स स्वेल्स अप अ लॉट, इतने टाइम से सहन करते रहते, उसको आदत, तो उसको समझ जाता है कि अभी आधे घंटे में ये सब लाल लाल होने वाला है, मुझे खुजली होने वाली है. तो once it is going to start, he comes to know and he is at some social occasion, he can take the tablet easily. तो वो टैबलेट ले लेगा, तो उसको वो हाफ एन आवर के अंदर द टैबलेट स्टार्ट्स वर्किंग एंड ही विल नॉट गेट ऑल इनटू ऑल दोस ट्रबल. And in fact, having the tablet in the purse, he has a mental peace of mind कि कुछ हो गया तो मैं वो ले लूंगा, मुझे कुछ नहीं है, तो उससे भी डिस्ट्रेस अपने आप हो जाता है. that is a placebo effect कि भाई हाँ मेरे पास है ये, कुछ हो गया तो मैं ले लूंगा, ठीक हो गया. So that is the way I handle it. And sometimes what actually happens is patient forgets one day, तो next day उसको ज़्यादा बढ़ जाता है. So if he has 1 strip at home, one strip with him and 1 strip in the office, so he can always handle it. Right, that's the perk of going be prepared. I'm all prepared. अगर आप prepared रहेंगे, अपने पास एक extra strip रखेंगे, मोस्टली आपके डर्मेटोलॉजिस्ट आपको सजेस्ट करेंगे ही, जैसे कि डॉक्टर दवे अपने पेशेंट्स को कहते हैं, तो आपको चिंता नहीं होगी. आपको पता है कि आपके पास एक बैकअप है, और ये थोड़ा सा आपको मेंटल पीस देगा, और हो सकता है कि अर्टिकेरिया की जो प्रॉब्लम है या वो कम हो या ना हो. We would also like to know, doctor, that does urticaria makes one tired? Because many patients at times complain of getting very tired. Yeah, it makes you tired because it mentally also exhausts you, and you keep on scratching, that also exhausts you. The blood supply, there is flushing, तो मतलब पूरा blood, काफी सारा blood आपके body के surface पे आ जाता है. And the heart is also working a little bit overtime, so you are bound to get tired. It is like getting a little bit of workout without doing anything. So उसमें थकान लगती है because you keep on scratching, you scratch here, then you start getting scratching here, everywhere. So you keep on scratching it, it increases, and then in the end you are tired. Right.
so that can actually make you tired. अच्छा, इनिशियली हमने बात की कि एलर्जी तो है डेफिनेटली आर्टिकेरिया, और कई बार एलर्जी, फूड एलर्जी या मेडिकेशन में एलर्जी या प्रिजर्वेंट्स में एलर्जी, ऐसी बहुत सारी चीजें जिसकी वजह से हो सकता है। अब अगर हम डाइटरी प्रिकॉशंस की बात करें डॉक्टर, आपने भी ये कहा कि कई बार लोग जो है जब उनको आर्टिकेरिया होता है या आर्टिकेरिया कभी भी ना हो, इसके लिए खुद से ही एक वो बना लेते हैं कि अच्छा सी फूड से कई लोगों को एलर्जी होती है, मैं सी फूड नहीं खाऊंगा, एग से होती है मैं एग नहीं खाऊंगा, ब्रिंजल से हो सकता है, जो भी पोटेंशियल एलर्जेंस हो सकते हैं, लोग उससे दूरी बना लेते हैं। तो अगर हम डाइटरी प्रिकॉशंस की बात करें तो डूज एंड डोंट्स क्या है पेशेंट्स ऑफ आर्टिकेरिया के लिए, और इन जनरल हमें क्या ध्यान में रखना चाहिए डाइटरी प्रिकॉशंस के तौर पर? Okay, so Urticaria is not one and same for each and every person. किसी को पीनट्स एलर्जी, किसी को नहीं रहेगी। तो आपको किस चीज से एलर्जी है अगर आपको पता है, यू कैन अवॉइड, बट यू हैव टू बी वेरी श्योर अबाउट इट। अब वो श्योर कैसे हो गए, एक आप खा के देखिए, आपको तुरंत 1-2 घंटे में होना चाहिए। अगर आप नहीं खाते हो तो आपको नहीं होना चाहिए। इफ इट इज वेरी 1-to-1 कोरिलेशन तो आपको पता चलेगा। अभी होता ही है कि एक ही चीज से एलर्जी नहीं, मल्टीपल चीजों से भी हो सकती है। सो देयर आर टेस्ट अवेलेबल फॉर दैट। वो ब्लड टेस्ट करेंगे तो यू कम टू नो विच ऑल थिंग्स यू आर एलर्जिक टू। उसमें जो इसमें स्ट्रांगली एलर्जी दिखाते हैं वो आप यू कैन जस्ट कट आउट ऑफ योर फूड एंड यू विल बी फाइन। अभी होता है उसमें ऐसा है कि लोग बना लेते हैं कि भाई मैं एग नहीं खाऊंगा, इससे नहीं खाऊंगा, विच द एल्डर पीपल टेल यू इन द हाउस कि भाई ये चीजों से होते हैं, जो दादी माँ के नुस्खे जो रहते हैं उसके हिसाब से वो लोग निकाल देते हैं फूड में से। उससे क्या होता है कि 90% टाइम्स यू आर नॉट एलर्जिक टू दैट। तो वो फालतू में यू आर अवॉइडिंग ऑल दोस थिंग्स एंड व्हाट हैपेंस इज आपने एक चीज निकाल दी, वो फिर भी आपको हो रहा है, फिर दूसरा कोई दूसरी चीज बोलेगा वो निकाल देंगे। ऐसा करके हार्डली कोई चीजें खाने के लिए बचती है। तो स्टेप बाय स्टेप यू रिमूव एवरीथिंग। तो वो and more than half of the times it is not food induced when you are cutting all the foods. So उसके लिए टेस्ट आते हैं, यू कैन डू द टेस्ट। उसमें रिपोर्ट में आ जाता है कि किससे आप एलर्जी को, वो सब अवॉइड करो, बाकी सारा खा लो, कोई इशू नहीं। बिल्कुल, तो इसलिए खुद से ही मान के कि ये इन सब से सबको एलर्जी हो सकती है या इनसे होती है एलर्जी, इसलिए उन फूड आइटम्स को अपने प्लेट में से ओमिट ना करें, बिकॉज बाय ओमिटिंग एनी फूड आइटम फ्रॉम योर प्लेट यू आर एक्चुअली ओमिटिंग दोज विटामिन्स, मिनरल्स एक्सेट्रा, that particular food item is providing you, so don't do that. अगर आपको सही में किसी चीज से एलर्जी है, आपने टेस्ट किया है या आपको पता है, तो उसे अवॉइड कीजिए, पर सब कुछ खाना छोड़ना इज नॉट द सोल्यूशन, एंड डेफिनेटली यू हैव योर डर्मेटोलॉजिस्ट विल एडवाइज यू द बेस्ट थिंग फॉर यू। डॉक्टर, वन मोर थिंग, जब भी स्किन एलर्जी की बात होती है तो लोगों के दिमाग में ये डर होता है कि कहीं ये कंटेजियस तो नहीं है, ये छूने से फैलेगा तो नहीं, मुझे तो नहीं हो जाएगा। आर्टिकेरिया के केस में क्या है? No, it's not at all contagious. It's basically आपका इम्यून सिस्टम कोई चीज को रिकॉग्नाइज करता है, फॉरेन चीज को, कि ये दिस इज नॉट एक्सेप्टेबल, और उसके अगेंस्ट वो एक्शन लेता है। सो दैट इज द अर्टिकेरिया। तो वो दैट कैन नॉट बी ट्रांसमिटेड फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर। इट इज नॉट एन इन्फेक्शन, कोई कीटाणु वगैरह नहीं है कि एक से दूसरे को लगे। It is not at all contagious. Touching, hugging, nothing is not even hereditary का भी किसी को पता नहीं, mostly it is not hereditary. And can COVID cause hives on face? Because in the last 2.5 years, we have came across many patients who have, complained of hives on their face after they had COVID. Yes, COVID can cause hives. COVID vaccine can also cause hives. So basically, ये जो होता है जब आपके बॉडी में कोविड वायरस आता है, वायरस के जो एंटीजेंस होते हैं उसके अगेंस्ट जब एलर्जिक रिएक्शन होता है, सो देन यू कैन गेट हाइव्स। इट कैन बी फुल बॉडी ऑल्सो, एंड आप अगर क्या बोलते हैं ये लेते हो, कोविड वैक्सीन लेते हो, तो भी हाइव्स हो सकता है। समटाइम्स दैट इज कोविड रिलेटेड, बट समटाइम्स आप बच्चों को जो वैक्सीन देते हो उनसे भी हो सकता है। इट इज वेरी मच पॉसिबल, क्योंकि उसमें प्रोटीन्स होते हैं, उससे थोड़ा बहुत एलर्जी हो गया तो इट इज ऑफ नो कॉन्सिक्वेंस। उससे कोई आपका खराब नहीं होने वाला है। ओनली थिंग इज यू जस्ट हैव टू ऐड एन एंटी एलर्जिक टू योर ट्रीटमेंट एंड इट विल गेट कंट्रोल। बिल्कुल, तो उसे घबराने की जरूरत नहीं है। इशिता झा हमारी एक व्यूअर है, पूछ रही हैं कि ट्रीटमेंट ऑप्शंस क्या है, और मैं भी आपसे यही जानना चाहूंगी कि व्हाट आर द ट्रीटमेंट ऑप्शंस अवेलेबल टू ट्रीट
Urticaria? Urticaria has a lot of treatment options. Mostly हम लोग tablets से start करते हैं. Once at night is generally enough. We can updose it up to 4 times in a day depending on the control. तो जैसे अभी रोज रात को दवाई ले रहे हो, आई एम टॉकिंग ऑल अबाउट द क्रोनिक अर्टिकेरिया बिकॉज दैट इज द डिफिकल्ट वन टू मैनेज. तो रोज रात को ये टैबलेट लेंगे तो फिर फुल डे आपको ठीक रहता है, तो इट इज फाइन. इफ इट इज नॉट रात की एक टैबलेट से नहीं हो रहा तो उसको दिन में 2, दिन में 3, दिन में 4 बार तक इंक्रीज करते हैं. इफ दैट इज नॉट वर्किंग वी कैन शिफ्ट टू अनदर स्ट्रॉन्गर वन to give you better control. So उससे भी नहीं होता तो we can add 2 or 3 or more tablets. So एंटी एलर्जिक जो एंटीहिस्टामिनिक्स होती है, जो सेट्रिजिन कॉमनली यूज होती है, वो उससे कंट्रोल रह जाता है. इट इज लाइक 80-90% का कंट्रोल ओवर दैट. अगर उससे नहीं होता then we have other options. If it is very severe तो फिर oral या injectable steroids देते हैं to bring down the acute phase और control the symptoms. उसके बाद antihistaminics are enough. तो वो tablets are the mainstay. 99% लोगों के लिए वो enough होता है. And some people, if it is not getting control, we have more options. Options में एक injections आते हैं, anti-IG injections आते हैं, immunobiologicals. So that can be used. Apart from that, injections जो होते हैं उसके बाद अगर उससे नहीं हो रहा है तो we can make a autoimmune urticaria रहेगा. It means there is no outside allergen and you are getting allergy. Your body is thinking that you are getting allergy. तो उसके लिए autologous serum injections आते हैं. तो यू कैन आपका ब्लड लेके उसमें काइंड ऑफ वैक्सीन के जैसे यूज होता है, वो आपका ब्लड लेके वो इंजेक्ट करते हैं आपको. तो व्हाट वी आर मेकिंग बॉडी गेटिंग यूज्ड टू ऑल दैट एलर्जी. सो जो उसको गलतफहमी हुई है कि एलर्जी हो रही है अपने को, वो निकालने के लिए वी यूज दैट थिंग. तो आपका ब्लड लेके आपको इंजेक्ट करेंगे इन द मसल्स सो दैट दैट थिंग गोज अवे. सो देयर आर डिफरेंट ऑप्शंस अवेलेबल. Patient takes treatment regularly and routinely, तो फिर mild tablets से ही which are very safe for long time we can control it. So you just have to see. अभी उसमें cetirizine आता है, mentologast आता है, fexofenadine, allegra जो commonly बोलते हैं वो आता है, desloratadine है, steroids है, बहुत सारी चीजें दे सकते हैं. Basic thing is not steroids. हम steroids commonly नहीं देते हैं. Patient worries about that कि हमको steroid देंगे डॉक्टर के पास जाएंगे तो. बट इट इज नॉट स्टेरॉइड्स. मोस्टली वी स्टार्ट विद एंटीहिस्टामिनिक्स जो आप सर्दी जुकाम के लिए भी लेते हैं. सेम थिंग, सेम मेडिकेशन इज देयर. सो यू हैव टू टेक इट फॉर लॉन्ग टाइम. मेन थिंग इज लंबे टाइम तक लेना है, रेगुलरली लेना है. इट विल बी ऑल फाइन. राइट. और उससे भी जरूरी है कि डर्मेटोलॉजिस्ट के पास जाना है, खुद से कुछ नहीं लेना है, ओवर द काउंटर कुछ नहीं लेना है, ये खतरनाक हो सकता है. तो प्लीज गो एंड कंसल्ट योर डर्मेटोलॉजिस्ट इन केस यू हैव अर्टिकेरिया. अपने डॉक्टर पर ट्रस्ट कीजिए, पूरा ट्रीटमेंट का जो कोर्स है वो कंप्लीट कीजिए, इससे आपको निजात जरूर मिलेगी, आराम जरूर मिलेगा. ये भी मैं जानना चाहूंगी क्योंकि कई बार जब हम ट्रीटमेंट्स के लिए जाते हैं तो पेशेंट्स को कहते हैं कि ये लैब टेस्ट आपको कराने होंगे. तो अर्टिकेरिया में भी क्या लैब टेस्ट होते हैं या सिर्फ हिस्ट्री से या उनसे बात करके एक जनरल इन्वेस्टिगेशन से ही ट्रीटमेंट स्टार्ट किया जा सकता है? इफ इट इज नॉट वेरी सीवियर तो जनरली हम लोग माइनर जो रहेगा, इट इज नॉट वेरी डिस्ट्रेसिंग, तो फिर हम सिर्फ मेडिसिन से ही करके देखते हैं. बिकॉज मोस्टली इवन इफ द लैब टेस्ट कम पॉजिटिव, वही ट्रीटमेंट वही रहने वाला है. सो इफ इट इज सीवियर तो आई लाइक टू गो फॉर इन्वेस्टिगेशंस. तो उसमें अलग अलग होते हैं. जैसे IgE है which shows the allergy levels in your body. तो स्पेसिफिक IgE टेस्ट होते हैं. तो पैनल्स होते हैं उसके काफी. फूड पैनल रहेगा, एयरबोर्न पैनल रहेगा, वेज नॉन वेज पैनल रहेगा. तो उससे दे टेस्ट फॉर एलर्जी टू स्पेसिफिक थिंग्स. लाइक इन फूड्स they will test for your potato, your cauliflower, your brinjal, everything. For non-veg, for seafood, everything. हर एक चीज के लिए आता है. तो when you get the reports, you come to know कि किस किस चीज से ज्यादा एलर्जी है, किस चीज से एलर्जी नहीं है. तो उन चीजों पे अवॉइड करना है. एयरबोर्न एलर्जन टेस्ट भी रहता है. तो उसमें आपको पता चल जाए कौन से पेड़ पौधे के पोलन से हो रहा है, आपको किसी कौन से केमिकल से हो रहा है. तो उसको आप अवॉइड करोगे, then you will be fine. So these are required, but they are a bit more costly. So अगर if the patient is not very serious, तो बहुत ज़्यादा है नहीं, तो फिर only tablets से it is enough. But if it is severe, then we want to catch hold of what allergen it is causing. तो हम टेस्ट करते हैं IgE levels. फिर स्किन टेस्ट भी होते हैं उसके.
Those are rarely required, but yes, we can go for it. ओके कुछ व्यूअर्स के और हम सवाल ले लेते हैं. पारुल शिंदे is here asking what pre-hospital care should be given for urticaria if anaphylactic shock is suspected. See, anaphylactic shock घर पे तो lay person नहीं diagnose कर पाएगा, but it will be basically very severe and patient will fall down and eye swelling, lip swelling, throat swelling होता है, wheezing चालू हो जाता है. So that is the very acute kind of attack of an allergy. So उसके अंदर generally if the patient has a history of anaphylactic shock in previous times, तो उसके पास एपिनेफ्रिन का पेन होता है, एपीपेन होता है उसके पास जनरली. सो व्हाट यू कैन do is you can just check उसके pockets में, पर्स में वगैरह रहेगा, एपिनेफ्रिन का पेन रहेगा, you just have to take it and stab on the thighs. So वो उससे जो उसका acute attack है वो stop हो जाएगा. If you don't find it, rush him or her to hospital. वहाँ पे injections दे देंगे, तो they will be under control. But diagnosing that is for a lay person it is difficult. Only thing is before the patient becomes unconscious, he or she can tell you that I got an allergic reaction, or if you are known to that person and you know कि भाई इसको allergy है, तो वो EpiPen रहता है उन लोगों के पास. They have for emergency cases epinephrine pen. They will take it themselves, or if not, then you can give it. Okay. रुचि शर्मा पूछ रही हैं can urticaria affect internal organs? Yes, our internal organs are also affected. जैसे मैंने बोला आपको, when you have it बहुत ज़्यादा हो गया तो फिर ये throat के अंदर spasm हो जाता है, lungs के अंदर spasm हो जाता है, headache होने लगता है, heart beat थोड़े बढ़ जाते हैं. All of those things are systemic things, but mainly it is skin. Mainly it is skin. When it becomes too much, तो फिर वो when it becomes too severe, that time all these things start happening. Right. Sonia Iyer is asking, I have red spots on my face and hand. How to reduce them? See, this is a lay person diagnosis red spot. अभी red spot के अंदर कुछ भी हो सकता है. Right. Not necessarily urticaria. It can be allergic. It can be sunburn also. Face and hands. That means it's an open area, so it can be allergy to sun or something else. So have to see, and then we can decide what it is. Right. So please see a doctor, and in this case, a dermatologist, to find out what exactly you're suffering from. Kamal Mehra is here asking, sir, my skin is very sensitive. My hand gets peeled from time to time and dirty water comes out. What should I do for that? So that is not urticaria. Basically, he's having allergy to something, or he may be basically, if his skin is sensitive, so he may be a case of atopic dermatitis. So that has to be managed properly, and he can come and consult a dermatologist, and it will be explained properly. Okay. Sakina Mistry is asking, what can aggravate urticaria apart from food? Though we have already discussed it, but still, if you want to again explain to them. Anything can aggravate it. Food, something in air, your stress levels, what you eat, what you wear, what you touch, anything can cause it. Sometimes you are allergic to some person. So anything can aggravate it. That was funny. Ishu Chaudhary, doctor, is asking, what is the prognosis of acute and chronic urticaria? So acute urticaria has a very good prognosis. You give medicines, 1 or 2 weeks, it generally goes away. Whatever causing the allergy, जो आपके बॉडी में गया वो एक बार फ्लश आउट हो गया कि फिर वापस नहीं हो गया. Chronic urticaria is like a test match, लंबा चलता है. जब तक आप दवाई लोगे तब तक कंट्रोल रहेगा, कब जाएगा भगवान ही बता सकता है. Nobody can know. Till the time you are taking medicine, you will be fine. That is for sure. So take medicines properly, and it will remain under control. But prognosis wise, if you say it goes away eventually, just have to be sincere in taking medicines. If you are sincere, you keep it suppressed for a long time, then generally it goes away in few months. Okay, right. So I'm sure Ishu Chaudhary has an answer now. Doctor, now as we are, coming to the conclusion of this session, what
message you have for our viewers or anything that you would like to share apart from what we have discussed, please go ahead. Okay, so basically my main message for patients is, when everybody is watching, कि ये urticaria के लिए talk है, but what you have, if you're suffering from anything on the skin, it may be urticaria, it may be something else. तो खुद से दवाई मत कीजिए. मेन थिंग इज कि आजकल लोगों के पास टाइम कम होता है, तो ऑनलाइन कंसल्टेशंस भी अवेलेबल है. यू टेक दैट फैसिलिटी. Don't go self treating yourself or take medicine according to the chemist or your friends or somebody from your house, because in most of the cases जो आपको देंगे कुछ क्रीम दे देंगे and it will mostly contain steroids, तो उससे आपको हार्म ही होगा. शॉर्ट टर्म के लिए थोड़ा ठीक लग सकता है, बट लॉन्ग टर्म में आपको हार्म ही होगा. सो वॉट एवर यू आर सफरिंग फ्रॉम, उस डिसीज का जो एक्सपर्ट है उसके पास जाके कीजिए. प्रोफेशनल हेल्प विल बी द बेस्ट. Right. Thank you so very much, Dr. Hardik. You explained everything so well. Thank you so very much for your valuable time. It has been a very informative session for our viewers, and I'm sure they will use this information to prevent themselves and their near and dear ones from getting urticaria. And in case if they get to see such symptoms, they now know that instead of self-medication, it's always better to approach a nearby doctor, dermatologist in this case. It was great to hear you, sir, and we really look forward for many more such sessions in the coming times with you for our viewers. Thank you so very much. Thank you. Pleasure being here. And viewers, thank you for your active participation in today's session. And to get latest updates on how to keep your skin healthy, do like and follow our FB page, All About Skin Allergy. We are also available on YouTube, Twitter, and Instagram. Thank you. Goodbye. Have a good day.